पढ़िए एंग्लो मराठा वॉर्स। स्क्रीन दिख रहा बराबर? जी सर। तो कितने वॉर्स हुए एंग्लो मराठा वॉर्स? एंग्लो मराठा वॉर्स कितने थे? Marathà War 1775 to 1782. Second Maratha War 1803 to 1805. Third Anglo-Maratha War 1870 to 1818. 1817 to 1818. ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर नॉर्मली we have to see that कितने मराठा वॉर्स हुए? there are three मराठा वॉर्स। सर आपकी आवाज स्लो आ रही है सर। there are three मराठा वॉर्स। there are three मराठा वॉर्स। एंग्लो मराठा वॉर्स there are three. what are those? first anglo maratha war, second anglo maratha war है, third anglo maratha war। first maratha war कब हुआ? 1775 to 1782। 1782 1803 second anglo maratha war 1803 to 1805। then the third anglo maratha war happened in 1870 to 1818। पहला कितने साल चला? 7 साल। पहला वॉर कितने साल चला? 7 years। सेकेंड वॉर 2 years। थर्ड वॉर 1 year। 1 year। ठीक है, you have to remember this, right? Let us go in detail। first anglo-maratha war पढ़िए, please read। let us first read completely, then we'll go in detail। please read। please read the first anglo-maratha war। First Anglo-Maratha War 1775 to 1782, fought in the period of Warren Hastings. Peshwa Madhavarao died in 1772. He was succeeded by his brother Naran Rao, who was got murdered by his uncle Raghunanda Rao. Maratha noble Nanifed revolted and placed Nanifed's son Madhavarao on throne of Peshawar. Then Raghunath Rao ran to company's Bombay government. Peshwa सर आपकी वॉइस लैग हो रही है सर, बफर हो रही है। पढ़िए पूरा। The Raghunath Rao ran to company's Bombay's government and signed the Treaty of Surat in 1775 to gain the throne with the help of English troops. By the Treaty of Surat, Raghunatha Rao had promised to cede the area Celestate and Basinen and also refrain from forming an alliance with the company enemies. In the First Anglo-Maratha War that followed, there was a series of which the Treaty of Salbai was signed in 1782. तो कौन सी ट्रीटी हुई? ट्रीटी ऑफ सालबाई। ठीक है, so first anglo-maratha war, the first anglo-maratha war was fought for 7 years from 1775 to 1882 to 1782. 1775 to 1782. Fought in the period of Warren Hastings. Warren Hastings is the first Governor General of Bengal. Then at the time of in 1772 the Madhav Rao died. Then he was the you have the Peshwas. Peshwas was the chief minister.
ठीक है, they were in Marathas, they have a post. Peshwa was the, what I can say, Peshwa was called as the chief minister. This post was mostly, first you had the Chhatrapati, then first you have the Chhatrapati, but after Chhatrapati, who became powerful? The Peshwas became very powerful. In the beginning, it was advisory role of Peshwa, but once the dynasty developed, once the rule developed, Peshwa became the post of Peshwa became very, very important. Now, who died in 1772? Peshwa Madhav Rao died in 1772. Then the third point you have, he was succeeded by his brother Narayan Rao, who got murdered by his uncle Raghunanda Rao. Okay. Next, Maratha nobles under the Nana Fadnavis revolted and placed Narayan Rao infant son. Infant mane chota bacha, not even the, what you can say, not adult. Small. A small son Madhav Rao too on the throne of Peshwa, because क्या बोलते हैं, भाई को एक्सेप्ट नहीं करे वो लोग, चाहे वो बेटा छोटा भी रहने दो, they accepted it. Then the Raghunath Rao ran to company Bombay because देखिए अपने उसको थ्रोन होना था. He took the help, चाहे किधर से भी हेल्प आने दो, he took the help. And then he said he signed a treaty with Treaty of Surat. Surat किधर है? Very Surat. Treaty of Surat. सूरत किधर है? कौन सा सिटी है सूरत? सूरत किधर है? गुजरात में है. Now, even in the medieval India, in the modern India, Surat is very, very important. Right. Now, Raghunath Rao ran to the company's Bombay government and signed the Treaty of Surat in 1775 with the help of English troops. Now, by this, Raghunath Rao, what promised Raghunath Rao? He said, these two areas, if I win and if I get the throne, I give you this two areas. These are agricultural, very fertile areas. And then he said that in the future, I will not go against the Britishers. Okay, these were the terms. Then you have in the first Anglo-Maratha War that followed, and it was followed in 1775 and ended in 1782 with the help of, and the treaty which was signed after the first Anglo-Maratha War was Treaty of Salbai. Okay? Salbai. So this ended the first Anglo-Maratha War. Clear hai? Next, we'll read the Second Anglo-Maratha War, started from 1803. First Anglo-Maratha War happened during the time of Warren Hastings. The Warren Hastings is gone now. The Wellesley has come. Okay, Second Anglo-Maratha War. Please read. Second Anglo-Maratha War. Please, someone else, please. एक बार पढ़ लिया आप. Zara, please read. Are you there? Zara, Shoaib, Haider, Amir, Fiza, Altaf. Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805. Wellesley. Background and codes. At that time, Maratha Confederacy consisted of 5 major chiefs: the Peshwas at Pune, the Gaekwaks at Baroda, the Holkars at Indore, the Sindhias at Gwalior, the Bhonsles at Nagpur, and there was an internal power struggle among themselves. Bajirao II was installed as the Peshwa after the death of Madhav Rao II. He was weak, and Maratha nobles Sindhia and Holkar wanted to influence Peshwa. Peshwa inclined towards Sindhia. In the Battle of Pune in 1802, Yashwa Rao Holkar
the chief of the Holkars of Indore, the Peshwas and the Sindhyas. Bajirao saw protection and the British maintain the British when we start the Second Anglo-Maratha War, 1803 to 1805, which was fought for 2 years, and during the time of Wellesley, the Governor General of Bengal, background was it at the time Maratha Confederacy. Maratha Confederacy mane it is like a group. It is like a group. उसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5. इसमें थोड़े एरियाज थे. There are very areas. Now if I draw a map here, ये टाइम पे जो एरियाज थे, पुणे किधर है? इट वॉज इन महाराष्ट्र. ठीक है. द गाय का बड़ौदा, गुजरात का एरिया क्या बोलते थे? या गुजरात, द बड़ौदा इज इन गुजरात. पुणे माने महाराष्ट्र. इंदौर माने आज का मध्य प्रदेश. हियर समवेयर हियर. देन यू हैव ग्वालियर किधर है? वेयर इज ग्वालियर? ग्वालियर कौन सी सिटी में है? ग्वालियर इज इन विच सिटी? जल्दी. उत्तर प्रदेश. ग्वालियर मध्य प्रदेश में ही है. ठीक है, इधर कुछ. और उसके बाद नागपुर इज इन ऑल्सो महाराष्ट्र. जी, तो नागपुर इज इन ऑल्सो मध्य प्रदेश. ठीक, सॉरी महाराष्ट्र. क्लियर. देन यू हैव ये पूरे क्या है? दीज आर द पावर सेंटर्स. ये पूरे जो एरियाज थे, दीज आर द पावर सेंटर्स. इधर से लोग क्या है रूल करते थे. ग्वालियर है, बड़ौदा है, इंदौर है, ग्वालियर है, नागपुर है. पेशवास किधर थे? पुणे में थे. गायकवाड़ किधर थे? बड़ौदा. होलकर्स किधर थे? इंदौर. और ग्वालियर सिंधियास. और नागपुर भोंसले. ये जो एरियाज के नाम याद रखिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, इसके बाद क्या हुआ? देन देयर वाज अ इंटरनल पावर स्ट्रगल which made the Britishers to start the Second Anglo-Maratha War. It was the best chance for them to subdue the Marathas. Then you have Bajirao II. Bajirao II was installed as the Peshwa. Now अगर आप देखिए इधर, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में क्या हुआ? Who died? 1717 में कौन? Who died? नारायण राव. पेशवा माधव राव died. Then he was succeeded by Narayan Rao, but he was not accepted. Then his infant son Madhav Rao too was fought on the throne. कब बिठा इसको throne पे? 1772. ना उसी का continuation है. देखिए, now Bajirao II was installed as a Peshwa after the death of Madhav Rao II. Who was Madhav Rao II? नारायण राव infant son. ठीक है, नारायण राव infant son. Now Madhav Rao II died here. Then who became the Peshwa next? पेशवा कौन बने? Who became the Peshwa? Bajirao II.
एक सेकंड, I'm seeing for no. देखिए स्क्रीन पे दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा। लो, are you able to see the screen? Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या है देखिए, इंपॉर्टेंट पेशवास। पहले क्या थे? इंपॉर्टेंट किंग्स, शिवाजी भोंसले, ठीक है, शिवाजी भोंसले, फिर संभाजी, राजा राम, शाहू और राजा राम टू। उसके बाद में कौन है इंपॉर्टेंट पेशवास? हु आर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पेशवा कौन है 1689 से 1708? रामचंद्र and Madhya. पंत अमात्य 1708 तक। देन हु बिकेम द पेशवा? Balaji Vishwanath. बालाजी विश्वनाथ। देन 1713 से 1720, Bajirao 1. बाजीराव 1, 1722, 1740। देन यू हैव बालाजी बाजीराव 1, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव और नाना साहेब 1 इसको बोलते हैं, 1742, 1761। देन माधवराव का बना 1761 to 1772. 1761 to 1772। फिर उसके बाद में सवाई माधवराव 1772 to 1795, ठीक है। ये था अपना मेजर पेशवास, इंपॉर्टेंट पेशवास। देन यू हैव ना, इधर देखिए बाजीराव 2 sought ब्रिटिश प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या? बाजीराव 2 was installed as a पेशवा at the death of माधवराव 2। देन यू हैव कब हुआ ये? when did this war, when did second world war start? 1803. 1803। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट माधवराव 2 जो है, कहां से है? माधवराव 2 सवाई माधवराव ही बोलते थे। कब से कब तक है? 1772 टू 1795, ठीक है। देन यू हैव ऑल दिस थिंग। आफ्टर द डेथ ऑफ दिस सवाई माधवराव, ब्रिटिश गेन ए चांस हियर। तो क्या हुआ इधर? इन द फर्स्ट क्या है? बाजीराव 2 वाज इंस्टॉल्ड एज अ पेशवा आफ्टर द डेथ ऑफ माधवराव 2, और द सवाई माधवराव भी बोलते थे। ही वाज वीक एंड मराठा, बाजीराव 2 वाज वीक एंड द मराठा नोबल्स। सिंधिया कौन से एरिया से आते थे? Gwalior. Sindhia came from Gwalior Gwalior. and Holkar came from Indore, ठीक है। wanted to influence the पेशवा। पेशवा किधर बैठता था? पुणे। Pune. Pune was a capital, you can say. पेशवा inclined towards Sindhya। पेशवा किसकी तरफ चले गया? Sindhyas. पेशवा this Pune went towards Sindhya, ठीक है, of the Gwalior in the Madhya Pradesh। Then you have then the battle of Pune। When did the battle of Pune happen? 1802। 2. It happened in 1802. Yashwantrao Holkar, the chief of Holkars of Indore, defeated the Peshwas and Sindhya। What happened here? The Peshwa supported whom? पेशवा किसके तरफ चले गया? The Peshwa supported Sindhyas against whom? The Holkars, against the Holkars। What happened? The Holkars defeated both. Holkars defeated both Holkars defeated both Peshwa and Sindhyas. Sindhya, India. ठीक है। Then the Peshwa inclined towards Sindhya in the battle of Pune 1802. Yashwantrao Holkar, chief of the Holkar, defeated both the Peshwa and the Sindhya। Then the Bajirao 2 क्या बोलते हैं, walked away, ran away and signed the treaty of Bassein with them। उन्होंने ब्रिटिश के, देखिए अगर जान बचा के भाग गया हूं और जाके किसके साथ मिल गया? British के साथ। ब्रिटिशर्स। और कौन सी ट्रीटी साइन हो गई इधर? ट्रीटी ऑफ बसेन, याद रखिए। और फर्स्ट वॉर में कौन से एरियाज रघुनाथ राव gave to this Britishers?
सालसेट एंड बासेन, ठीक है, यही एरिया पे ट्रीटी हुई सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट, एज पर द ट्रीटी, इसके ट्रीटी का क्या था? एज पर द ट्रीटी ही सरेंडर टेरिटरी टू बांग्लादेश एंड ब्रिटिशर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप्स हियर, दैट इज नथिंग बट सब्सिडरी अलायंस। नाउ अगर आपको क्वेश्चन आया, हु इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस? वेलेस्ली। ये आपको पक्का क्वेश्चन है, सब्सिडरी अलायंस कौन इंट्रोड्यूस करा इंडिया में? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वेलेस्ली। Now, what was the British क्या है? He surrendered territory to the British, माने मेरा maintenance, मेरा protection, मेरा my protection, my area protection is under the hands of the Britishers. British का troops support करेंगे. That is nothing but your subsidiary alliance. उसके अंदर क्या है? The Scindias who were defeated, Bhonsle did not accept the treaty. The Bajirao II signed this treaty. But the Scindias and the Bhonsles did not accept the treaty, and this caused the Second Anglo-Maratha War in Central India in 1803. So, treaty Battle of Poona 1802, Battle of Poona से जो treaty हुई, उसकी वजह से क्या हुआ? Second Anglo-Maratha War start हो गया in 1803. The Holkars also joined the battle against the British and later staged. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? Bajirao II wanted to influence the Peshwa. Peshwa went with whom? पेशवा किसके साथ चले गया? पेशवा सपोर्टेड हूं? के साथ। पेशवा इंग्लैंड, सिंधिया। अब कौन अगेंस्ट हो गए सिंधिया और पेशवा के? होलकार्स, ठीक है, इंदौर से। Then they were defeated. उसके बाद में होलकार joined the battle of English at later stage. ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ पढ़िए, प्लीज रीड द रिजल्ट। प्लीज रीड द रिजल्ट। All the Maratha forces were defeated by the British in this battle. The Scindia signed the treaty of स्लो Surji. आप खुद के लिए नहीं पढ़ रहे, सबके लिए पढ़ रहे और समझ में आए जैसा पढ़िए। You are not reading the notes, you are reading the class notes. सबको समझना जैसा पढ़िए, स्लो। All the Maratha forces were defeated by the British in these battles. The Scindias signed the treaty of Surji Anjangaon in 1803, through which the British got the territories of Rohtak, Ganga, Yamuna, Doab, Gurgaon, Delhi, Agra region, Bharuch, some districts in Gujarat, parts of Bundelkhand, and Ahmednagar Fort. The Bhonsles signed the Treaty of Diogaon in 1803, as per which the English acquired Cuttack, Balasore, and the area west of Varda River. The Holkars signed the Treaty of Rajpur Ghat in 1805, according to which they gave Tonk, Bundi, and Rampura to the British. As the result of the war, a large part of the central India came under British control. Third Anglo-Maratha War, 1817-1818. So what happened in the Second Anglo-Maratha War? कि भाई लोग का पूरे फर्स्ट क्या है? It went on to the they started the with Bajirao II. They started the Second Anglo-Maratha War. Then first the Scindias, then the Bhonsles fought against the Holkar joined afterwards. But unfortunately, the Britishers were the victors. Britishers जीत गए। किस किस को हरा दिए? सिंधियास को हरा दिए, भोंसलेस को हरा दिए और होलस्कार्स को हरा दिए। ठीक है, सिंधिया से क्या ट्रीटी करे लोग? ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजनगांव। सिंधिया से क्या ट्रीटी करे? सुरजी अंजनगांव। भोंसले से क्या ट्रीटी करे? ट्रीटी ऑफ दियोगांव। और होलकार से क्या ट्रीटी करे? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। द होलकार से ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, भोंसले से ट्रीटी ऑफ देरोगांव और सिंधिया से क्या ट्रीटी हुई? सुरजी अंजनगांव।
ठीक है, ये नाम रखिए। सो ये इसके बाद जो जो ट्रीटीज हुए, सिंधियास किधर से थे? सिंधियास किधर से थे? ग्वालियर से। ग्वालियर से। भोंसलेस किधर से थे? नागपुर। नागपुर। होलकार्स किधर से थे? मध्य प्रदेश, इंदौर। इंदौर से थे। आज का मध्य प्रदेश में इंदौर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी। सो बाय दिस मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, माने माने मध्य प्रदेश, यूपी का ऊपर का हिस्सा पूरा, यूपी का नीचे का हिस्सा, इधर आगरा यमुना का जो है वो किसके अंडर आ गया? मराठास के अंडर आ गया। ठीक है, ब्रिटिश। और मेजरली सेंट्रल इंडिया। देखिए मैसूर, अभी तक कौन से वॉर्स हो गए? वी हैव सीन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर से बंगाल का एरिया आ गया था। द ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाइड द बंगाल एरिया। देन वी हैव सीन द बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर्स, माने जो कर्नाटका का एरिया है। ठीक है, देन वी हैव सीन द एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर से कौन सा एरिया आ गया? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया इन लोगों के हाथ में आ गया। ठीक है, सेंट्रल इंडिया हाथ में आ गया। देन उसके बाद में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर समझ में आया, सॉरी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर समझ में आ गया। देन वी विल सी द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ईच वॉर goes followed by the next war. ठीक है, प्लीज रीड। someone else please। कौन है क्लास में? अल्ताफ, प्लीज रीड। सर यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है या कोई दूसरे है? कहीं पर डिस्टर्बेंस नहीं है? मौजम, फिजा, जी sir. प्लीज रीड। As a result of the war, large part of central India came under British control. India Anglo-Maratha War थर्ड 18 to 17. एंग्लो मराठा वॉर, जो Third- पेपर पे वो पढ़िए, सही कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज। Okay. Third Anglo-Maratha War 1817-1818. Margot's Hastings, background and cause. After the Second Anglo-Maratha War, the Marathas made one last attempt to rebuild their old present prestige, and they wanted to rid all their old peasants for the English. They were also unhappy with the British interference in their internal matters. The major reason for this war was due to the British conflict with the Penderies, who the British suspect war suspected were being protected by the Marathas. The British attack on Penderies during the tenure of Governor General Margus was seen as the provocation by the Marathas, and it led to the beginning of this war. Peshwa Baji Rao II force supported by Bhosle of Nagpur and Halkar of Indore
rose against the East India Company. Sindhals of Governor remained natural. Appears Sindhyas of Gwalior remained neutral. neutral. Apple shape Bhonsle of Nagpur was defeated at Sitalbildi. Yes, sir, Sitalbildi, and forced to surrender. Halkar's troops were crashed at Mahendrapur. Mahendrapur. Siri minor battle war fight by the Peshwas, forced to prevent his capture. The Peshwa was defected. The Peshwa surrounding in 1818 he was dethroned and punished of a small east in better near Kanpur. Most part of his treaty become part of the Bombay presidency. They the territories annexed for the Penderals become the central provision under British India. These war lead to the end of the Maratha empires. This war led to the end of Maratha Empire. When you are reading, आपको देखना है कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं आप. You have dethroned, pensioned, punish नहीं है ये, pensioned, provinces, not आप ये गलत पढ़े. Pindaris, I दिख रहा आपको? It is I. आप जब पढ़ रहे देखिए प्रॉब्लम हो रही, बट जो वर्ड को गलत प्रोनाउंस नहीं करना, आगे नहीं बढ़ जाना. जो समझ में नहीं आया वर्ड को आप स्किप कर दे के आगे बढ़ गए उस. ठीक है ना. प्लीज कंप्लीट प्रैक्टिस करिए रीडिंग की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या नॉर्मली आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है. देन यू हैव द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 टू 1818 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मार्क्विस हेस्टिंग्स. ठीक है. सबसे पहला वॉर किसके अंडर हुआ? फर्स्ट वॉर हैपेंड बिटवीन द फोर्थ पीरियड ऑफ Peshwa 1, Peshwa 2. Britishers. First Anglo-Maratha War happened during the time of Warren Hastings. Second war happened during the period of Wellesley. And third war happened during the period of Marcus Hastings. Okay. Third war happened during the period of Marcus Hastings. Background and cause. After the Second Anglo-Maratha War, the Marathas made one last attempt to rebuild their old prestige. माने अपनी जो इज्जत खत्म हो गई थी, वो फिर से एक बार लास्ट कोशिश करे वापस लेने की. This was the reason, and wanted to take all old possessions from the English. माने सिंधिया से सूरजी अंजनगांव की ट्रेटी हुई थी, उसे पूरा ये एरिया चले गए थे. Then you have Bhonsles, सिटी ऑफ दरेगांव, कटक, बालासोर पूरे वापस ले लिए थे लोग, खींच लिए थे. Then होलकार से क्या लिए थे? ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट से टोंग, बंडी एंड रामपुरा was all taken in today's UP. Rampura in today's UP. Then we had this ये सब वापस लेने के एक लास्ट कोशिश करे वो लोग. ठीक है. और कौन कौन थे? When the third, आपको ये याद रखना है कौन द मराठास के साइड 5 कॉन्फेडरेसी थे, उसमें से कौन एकदम न्यूट्रल थे? सिंधियास ऑफ ग्वालियर रिमेन्ड न्यूट्रल. ना ही मराठास का साथ दिए, ना ही ब्रिटिशर्स का साथ दिए. कौन कौन लड़े ब्रिटिशर्स के आगे? नागपुर और इंदौर. ठीक है. नागपुर, भोंसलेस ऑफ नागपुर एंड होलकर्स ऑफ इंदौर. सिंधियास रिमेन्ड न्यूट्रल. Then the Bhonsle of Nagpur, Appa Sahib, Bhonsle of Nagpur defeated at Sitalbaldi. माने हार गए लोग.
Holkars were defeated at Mahidpur, and then several minor battles, Peshwas. Then the Peshwa was ultimately captured. Then the Peshwa was defeated. Peshwa was surrendered in 1818. He was dethroned. माने पेशवा की जो गद्दी रहती ना, गद्दी से हटा दिए और उनको पेंशन को भेजा दिए इन 1818 में. किधर? स्मॉल एस्टेट इन बिथुर नियर कानपुर. ठीक है, कानपुर किधर है? वेर इज टुडेस कानपुर? कानपुर कौन से सिटी में आता? कौन से स्टेट में आता? महाराष्ट्र. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. कानपुर यूपी सर. हाँ, महाराष्ट्र सर. महाराष्ट्र. कानपुर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश. कानपुर उत्तर प्रदेश. देन ही वाज Okay. बिथुर एक छोटी सी जगह थी, जैसे हैदराबाद है, तेलंगाना में हैदराबाद है, वैसी एक छोटी सी जगह है कानपुर में बिथुर बोल के, उनको उधर भेजा दी. इसके बाद ये मराठास खत्म हो गए पूरे. मोस्ट पार्ट ऑफ द टेरिटरी बिकेम द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है, सेंट्रल प्रेसिडेंसी. इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड ब्रिटिश, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में सेंट्रल इंडिया पूरा हाथ में आ गया था ब्रिटिशर्स के. थर्ड में क्या हो गया? ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, जो साइड के जो थे पूरे महाराष्ट्र के भी जो है, वो पूरे के पूरे ब्रिटिशर्स के अंदर आ गए. समझ में आ गया? दिस द टेरिटरी एनेक्स्ड बिकेम द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. This war led to an end of Maratha Empire. Clear? So this was your Anglo-Maratha wars. ठीक है? Clear?